29th October editorial. Women as proxies in politics, decision making and service delivery in Panchayati Raj. Summary. Gender equality in India is embedded in the constitutional provisions, including substantive equality, where the states are also empowered to make special provisions for women in order to undo the historical disadvantageous position of women. The 73rd and 74th Amendment of the Constitution in 1993 provided for reservations of seats in the local bodies of panchayats and municipals for women, laying a strong foundation for their participation in decision making at the local levels. हमारे इंडिया में जेंडर इक्वालिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में लिखा गया है, जिसमें कि इक्वालिटी दी जानी चाहिए और स्टेट्स को ये एम्पावरमेंट है कि वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाएं, जिससे कि हमारे जो हिस्टोरिकल पहले पुराने ज़माने में जो भी हमारी वुमेन के साथ गलत हुआ है, डिसएडवांटेजेस पोजीशन में जो रही गई हैं, उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो इसी के लिए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट लाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में 1993 में, जिसमें कि रिजर्वेशंस ऑफ सीट लाया गया वुमेन का इन लोकल बॉडीज ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपल्स एंड पंचायत में जो हमारी सीट्स को रिजर्व किया गया वुमेन के लिए, लेइंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर देयर पार्टिसिपेशन, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके इन डिसीजन मेकिंग। Why reservation for women is necessary? Women represent almost 50% of the population of India, but their representation in public life is low. Statistics continue to dishearten. India ranks well below the global average in terms of women's representation in parliament, as well as amongst countries which have mandated the minimum representation of women in parliament through law. हमारी इंडिया में women 50% ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है ऑलमोस्ट, बट उनका रिप्रेजेंटेशन पब्लिक लाइफ में बहुत ही कम है। हमारे स्टैटिस्टिक्स हमें अभी भी डिसहार्टन करते हैं कि इंडिया बहुत बिलो रैंक करता है ग्लोबल एवरेज के, कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है पार्लियामेंट में वो ग्लोबल एवरेज से भी बहुत कम है, एज वेल एज अमॉन्ग कंट्रीज विच हैव मैंडेटेड द मिनिमम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, कि इनके कंपैरिजन में जिन्होंने मैंडेट किया हुआ है कि मिनिमम इतना रिप्रेजेंटेशन वुमेन का होना चाहिए पार्लियामेंट में थ्रू लॉ के थ्रू। इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडिया रैंक्स वेरी लो ऑन द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कंपेयर टू मैनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज। तो इंडिया बहुत लो रैंक करता है ऑन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स का मतलब ये आप समझ रहे होंगे कि जेंडर इनइक्वल अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके कंपैरिजन में हमारा बहुत कम है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये आया गया है। फीमेल पार्टिसिपेशन इन द लेबर मार्केट इज 29% कंपेयर्ड विद 80.7% फॉर मेन। सिर्फ 29% लेबर मार्केट में वुमेन है, फीमेल पार्टिसिपेशन होता है, जो कि मेन का होता है 80.7, जो कि बहुत ज़्यादा है। वुमेन्स ओनरशिप ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी इज़ लेस देन 4%। वुमेन की ओनरशिप कोई भी लैंड हो या प्रॉपर्टी हो उसमें सिर्फ 4% से भी कम है, वेयर एज 73% ऑफ फूड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रूरल वुमेन। रूरल वुमेन कितना खाना प्रोड्यूस करती है? 73% ऑफ फूड, that is very big. Poor participation of women has a direct impact on the priorities and assumptions of policies and legislations. There will be a qualitative change in governance with the inclusion of women in decision-making processes. Hence, reservation for women is necessary. Why some scholars are against reservation for women? Some scholars have proposed that reservations can have the unintended and adverse consequence of weakening local democracy. They believe that women who are elected from reserved constituencies serve as proxies for their male relatives, exercising nominal powers while the men retain the real work of governance. Reservation of women के खिलाफ बहुत सारे scholars क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारे scholars ने प्रपोज किया है कि रिजर्वेशन से अनइंटेंडेड और एडवर्स कॉन्सिक्वेंस होता है लोकल डेमोक्रेसी पे, जिससे कि वो लोकल डेमोक्रेसी वीक हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वुमेन इलेक्ट तो हो जाती है, उनको रिजर्व भी मिल जाता है कॉन्स्टिट्यूंसी, बट वो एक प्रॉक्सी जैसे सर्व करती है। जैसे कि हम कॉलेज में प्रॉक्सीज लगाते हैं,
वो एक प्रॉक्सी जैसे सर्व करती है। मेन जो काम करने वाला पर्सन होता है वो मेल ही होता है, वो बहुत नॉमिनल पावर एक्सरसाइज करती हैं, बल्कि मेन जो है अभी भी रिटेन करते हैं रियल वर्क जो गवर्नेंस का होता है। रिजर्वेशन दे देयरफॉर आर्ग्यू इंटेंसिफाइज द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी by giving it the veneer of solution. However, the last decade has seen a wave of changes. Some argue that even if women are pushed into power with the intent of being proxies, they are eventually able to influence the delivery of public services. कुछ इसको argue करते हैं, अगर वो एक proxy की जैसे भी अभी भी काम कर रही है, but later on ये उनको इन्फ्लुएंस करेगा कि वो भी पब्लिक सर्विसेज में अपने कुछ काम कर सके। इन पर्टिकुलर रिसर्च हैज शोन दैट वुमेन्स नीड्स आर बेटर एड्रेस्ड इन विलेजेस वेयर देयर इज फीमेल सरपंच। ये देखा गया रिसर्च में कि जहाँ पे फीमेल सरपंच होती है जिन गाँवों में, उन गाँवों की वुमेन की नीड्स बहुत अच्छे से एड्रेस हो जाती है। अदर चैलेंजेस बिफोर दिस पॉलिसी, acceptability of women as elected representatives is an issue. Male members try to create hurdles in the smooth functioning of the panchayat, taking advantage of the women's illiteracy or ignorance. एक वुमेन को एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के जैसे देखना ये एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता है, यही एक इशू बन गया है। मेन मेंबर्स ये सोचते हैं कि पंचायत की स्मूथ फंक्शनिंग में ये हर्डल है, और वो इस चीज़ का एडवांटेज भी लेते हैं क्योंकि वुमेन मोस्टली इलिटरेट हो जाती हैं या इग्नोरेंट हो जाती हैं, तो इसका वो एडवांटेज ले लेते हैं। ऑल्सो समटाइम्स ऑफिशियल्स विद whom the elected women representative must work can act as impediments in their work. Impediments का मतलब होता है a hindrance or obstruction in doing something, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। Instead of saying hindrance आप impediment बोलिए। Okay? What needs to be done? We have adult franchise, but social inequalities denies us equal space in structures. An important remedy lies in enabling women to fight feudal inequality with modern tools. Mere adult franchise is insufficient. Women must have access to real participation in governance through representation in decision-making bodies. Dissemination of information regarding their rights as well as duties is essential for them, and non-governmental organizations, NGOs, should be encouraged to come forward in partnership with the government in order to fill this void. In addition, women representatives across different states should be encouraged to form associations in order to strengthen women political empowerment. बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत है कि आपकी राइट्स क्या है, आपकी ड्यूटीज़ क्या है, और बहुत सारे NGOs को भी ये एनकरेज करना चाहिए कि आप भी आगे आएँ और गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करें, और ये जो बीच का वॉइड है, जो बीच का गैप है, वो दूर हो। वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स शुड बी एनकरेज, इनको एनकरेजमेंट मिलना चाहिए। ऑल्सो ट्रेनिंग शुड बी मेड कंपलसरी, ट्रेनिंग देना भी बहुत ज़रूरी है। द इलेक्टेड रूरल वुमेन एंड वीकर सेक्शंस शुड बी एजुकेटेड and trained by which they can get the knowledge and understanding. Special training programs for the elected women members in panchayats should be organized. The state institutes of rural development and the non-government organizations may be required not only to prepare appropriate curriculum for them but also to organize the programs for them. The training programs for the elected women members in panchayats should be organized at state, district and block level respectively. The teaching methods for these women should be simpler as possible. Group discussions, success stories and case studies should be the part of training. Electronic media and audio-visual aids should be utilized in the training programs. State government should introduce incentives for the panchayats headed by women of marginalized sections of the society for good performance and attendance, rather developmental activities taken up. Ultimately, the improvements in the literacy among women and weaker sections hold the key factor for the effective participation in decision-making process and involvement with the developmental activities in the rural area. Way ahead, the effectiveness of reservation for women in positions at elected panchayats has political and social implications.
एक वुमेन का रिजर्वेशन होना, एक इलेक्टेड पंचायत के पार्टिसिपेट करने के लिए एक पोजीशन में, इनका ये दोनों इम्प्लीकेशन होता है, पॉलिटिकली भी और सोशल इम्प्लीकेशन भी। आप इमेजिन करिए आप एक विलेज में हैं और आप एक वुमेन हैं, तो आप एक रियलाइज़ कर सकते हैं कि वुमेन को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से उनकी आवाज़ नहीं होती है, किस तरीके से मेल डोमिनेशन होता है। अगर आप उसे इमेजिन कर सकेंगे तो you can follow the solutions also. Women's reservation is not a sufficient condition for politically empowering women. Access to public services is influenced by a variety of factors apart from gender. Public services में access करना ये बहुत सारी चीज़ों से influence होता है, gender के अलावा भी। The stark contrast in public exposure between men and women presents a powerful metaphor for their differentiated position in public space. Public exposure जो आपको पता है कि men को ज़्यादा मिलता है, women को थोड़ा कम मिलता है, तो मुझे ये कहना चाहिए कि दोनों को मिलकर काम करने के लिए अगर men अभी उनके पास ज़्यादा एक्सपोजर है तो उन्हें वुमेन को सपोर्ट करना चाहिए, टू कम फॉरवर्ड, हम आपके साथ हैं, वी विल गाइड यू, ऐसे कुछ करनी चाहिए। दिस देन कॉल्स फॉर अ मोर होलिस्टिक क्वालिटेटिव framework to understand the ways in which various social systems intersect and affect a female सरपंच influence on the delivery of public services. एक फीमेल सरपंच जब अपने पब्लिक सर्विस को डिलीवर करने का सोचती है तो क्या क्या फैक्टर्स है जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। The systematic inequality that infuses every aspect of social expression will have to be addressed for the 73rd Amendment to bring about true local democracy. We must know that participation and representation is clearly different from empowerment. हमें बहुत ज़रूरी है ये सोचना और समझना कि पार्टिसिपेट करना और रिप्रेजेंट करना ये टोटली बहुत अलग बात है from empowerment. An elected woman representative needs the requisite special space in order to effect the changes that she desires. Conclusion. Reservation for women in Panchayati Raj bodies has acted as a catalyst in the process of women's political empowerment. In order to further hasten this social change, the state should find out the gaps and effectively address them. State को find करना है कि वो ये gaps को fulfill करे और इन्हें जल्द से जल्द address करे. Also, the onus is on political parties who must voluntarily integrate more women in the political process, whether as candidates or as voters. We must remember that empowerment as a process is slow but self-perpetuating. Providing women with opportunities and support systems such as reservations and other affirmative actions has the potential to put into motion a sustainable process for a change in gender power relations, allowing them to slowly but steadily break the shackles of existing boundaries. Thank you.